Students, we have started already this chapter, plant growth and development, and completed that some portion like introduction, germination process, what is growth and the characteristics of growth, growth rates, and the model of the growth also, arithmetic growth and geometric growth, and measurement of growth by direct method, that is by oxynometer, and how it is measured, and the factors affecting the plant growth. So today we will study differentiation, de-differentiation, and redifferentiation. So these are also that part of the plant growth. Means what is the meaning of the differentiation? I have explained you in the previous part also, that cellular differentiation is the process by which a less specialized cell becomes a more specialized cell type. तो जो undifferentiated plant cell होती है, that is produced by the meristematic cells, it is being specialized. Specialized का मतलब किसी particular function के लिए, whether it performs the function of the mesophyll cells like of leaf cells, or it transports the that water there, the xylem cells, or that another that function there becomes parenchyma or other cells. So the phenomenon by which the cells derived from the root apical meristem, shoot apical meristem undergo permanent changes in their structure, biochemistry, size, physiology of cell wall, and protoplasm content, thus enabling the cells to perform the specific function. So cells derived from meristem and cambium differentiate, mature to perform specific function, which is termed as the differentiation. For example, जैसे ट्रेकियरी एलिमेंट का है, तो जो ट्रेकियरी एलिमेंट्स होते हैं, it is formed by the process of differentiation, where the cells elongate and lose their protoplasm to form the trachees. A strong elastic lignocellulosic secondary wall develops, which does not allow trachees to collapse under extreme tension and allow it to carry the वाटर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस. लाइक क्लोरीन कायमा जो सेल के अंदर होते हैं, तो ये जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं टू फॉर्म द टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस व्हिच इज डेवलप्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लिविंग सेल्स. तो इस तरीके से ये होता है डिफरेंशिएशन. नाउ द नेक्स्ट इज दैट the changes taking place here, I explained you already. Cells undergoes structural changes. Changes can take place both in their cell walls and protoplasm. Cells lose their protoplasm in the formation of tracheary elements. Plants develop a strong elastic lignocellulosic secondary cell walls to carry water to long distances even under extreme tension. Now next we will see the de-differentiation. अब de-differentiation का मतलब क्या होता है? That it is an important biological phenomenon whereby cells regress from a specialized function to a simpler state reminiscent of the stem cells. मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो differentiation के समय that cells they lose their ability to divide. De-differentiation के समय क्या होगा, cells they lose their ability to divide and form permanent cell, but कुछ जो सेल्स होती हैं दे रीगेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशन. तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब परमानेंट सेल्स बनती हैं, परमानेंट टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, वो कैसा होता है कि फर्दर इट इज प्रोग्राम्ड टू डू द पर्टिकुलर फंक्शन. फाइन, तो वो परमानेंट टिश्यू बन गया. अब वो परमानेंट टिश्यू जो है अगेन इट gains the capacity to divide under certain conditions. This phenomenon where certain living differentiated cell regain to attain the ability to divide and form the new cells, this is the de-differentiation. Means an undividable differentiated cell sometimes regain the power of division. फिर से divide होती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं de-differentiation. Fine. A deep differentiated tissue, for example, यहाँ पर टिश्यू लिया है, जैसे हमने टिश्यू कल्चर में स्टडी किया है, the removal of the somatic tissues and then they are grown into the culture medium. तो यहाँ जो हम टिश्यूज ले रहे हैं, they are actually the that cells of the plant, means they are working as the meristem. For example, in that intervesicular cambium, cork cambium, wound cambium, तो ये जो टिश्यूज हैं फर्दर ये डिवाइड होने लगते हैं, एंड और डिवाइड होकर के जो है
सेल्स बनाते हैं, दैट इज द डी डिफरेंशिएशन, उनकी रिप्रोग्रामिंग होती है और यहाँ पर जो है ये डी डिफरेंशिएटेड सेल की तरह काम करते हैं और जो है न्यू सेल्स बनाते हैं, दैट इज द कैलस फॉर्मेशन जिसको कहते हैं. सो इट इज अ कॉमन प्रोसेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ एंड वुंड हीलिंग मैकेनिज्म. इसलिए हम कह रहे हैं जो इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है जो कि परमानेंट सेल्स हैं उनका फंक्शन है, लेकिन फिर से ये मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में आती हैं और नई सेल्स को बनाती है, लाइक सेकेंडरी ग्रोथ इन stem and root in dicot plants you have studied already. So this is the dedifferentiation. Now next is the redifferentiation. What is redifferentiation? अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है डी डिफरेंशिएटेड, कौन सी? डी डिफरेंशिएटेड सेल कैन डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स, वी नो. So the dedifferentiated cell can again lose their ability to divide to form permanent cells specialized for a particular function. So new cells which are produced by the dedifferentiation, they lose the power of division and become a part of the permanent tissue which is called as the redifferentiation. तो यहाँ पर जो dedifferentiation से जो सेल बनी, पहला तो डिफरेंशिएशन हो गया, परमानेंट हो गई, अब वो परमानेंट सेल्स फिर से वो अपनी कैपेसिटी को गेन करती है डिवाइड होने की, वो डी डिफरेंशिएशन हो गया. अब ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर जो न्यू सेल्स बनी है ये फिर से जो है फर्दर जो है अपनी एबिलिटी जो होती है डिवाइड करने की वो लूज करके जो है परमानेंट सेल की बना लेती है, इसको कहते हैं हम रीडिफरेंशिएशन. इट इज सिमिलर टू द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स टिश्यूज फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी मेरिस्टेम. जैसे डिफरेंशिएशन में होता है वैसे ही रीडिफरेंशिएशन में होगा, क्योंकि डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं परमानेंट सेल्स, ये अपनी जो है एबिलिटी फिर से गेन करती है डिवाइड होने की, तो वो डी डिफरेंशिएशन हो जाता है. अब डी डिफरेंशिएटेड सेल लगातार डिवाइड होती हैं, लेकिन जब न्यू सेल्स जो बनती हैं डॉटर सेल्स, वो फर्दर उनमें डिवीजन स्टॉप हो जाता है और वो डिफरेंशिएटेड सेल्स बन जाती हैं, फर्दर डिवाइड नहीं होती हैं, परमानेंट सेल्स हो जाती हैं. तो इसको हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन. फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये जब जो भी सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के समय, ये सारा जो फिनोमिनन है ये रीडिफरेंशिएशन का है. लाइक ग्रोथ डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन इन प्लांट्स. The same apical meristem produces parenchyma, fibers, xylem, phloem, collenchyma, and epidermis. The final structure of a cell formed at maturity is also determined by the neighboring cells present in the tissues. For example, cell positioned away from the root apical meristem differentiate as the root cap cells, while those pushed to form the periphery mature as the epidermis. तो ये तीनों फिनोमिनन है, that is de-differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Now we will come to the next phenomenon, that is development. तो अभी तक हमने ग्रोथ के डिफरेंट पैटर्न्स स्टडी किए और किस तरीके से ग्रोथ होती है और मॉडल्स हमने स्टडी की. नाउ डेवलपमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, राइट फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू द सेनेसेंस. तो सेनेसेंस जबकि वो ओल्ड हो जाएगा प्लांट, तो जर्मिनेशन से लेकर के मैच्योर होने के बाद तक जब वो एज ओल्ड हो जाता है, ये पूरी जो प्रोसेसेस होती हैं, सारे चेंजेस जो होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, वो है डेवलपमेंट इन plants. Like meristematic cells, they divide to form the means a new cells, that is plasmatic growth. फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है, फाइन, यहाँ पे एक्सपांशन और मैच्योरेशन होगा सेल्स का, मैच्योर सेल्स बनेंगी, एंड देन फिर जो सेनेसेंस का पीरियड होगा, एंड देन एज कंप्लीट होने के बाद डेथ. तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द प्लांट सेल्स. Now, plasticity and heterophilia, these two terms are, I think, not given in the year's syllabus. So just for that information, I am explaining you that plasticity is the ability of plant to follow different pathways and produce different structure in response to the environment and phases of life. For example, in cotton and coriander plants, the leaves of the juvenile plant are different in shape from those of mature plant. This is
प्लास्टिसिटी, मतलब डिफरेंट पाथवे हैं ग्रोथ के. तो दे प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट एंड फेजेस ऑफ लाइफ. हेटेरोफिली, आई थिंक वी हैव स्टडीड इट ऑलरेडी, द फिनोमिनन ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीव्स ऑन द सेम प्लांट. एक ही प्लांट पर अलग अलग तरीके की लीव्स का प्रोड्यूस होना, दैट इज हेटेरोफिली. एंड हेटेरोफिली इज कॉमन इन कॉटन एंड कोरिएंडर. लाइक यहाँ पे आप देखोगे कि जुवेनाइल में इस तरीके की लीफ होती है, एडल्ट में इस तरीके की होती है. हेटेरोफिली इन लार्कस्पर और हेटेरोफिली इन बटरकप ऑल्सो. Now, plant growth regulators. So this plant growth regulators, here I will show you here. These are the hormones. Plant growth regulators, they are the chemical substances that influence the growth and differentiation of plant cells, tissues and organs. ओके, सो ये प्लांट हॉर्मोन्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिफरेंशिएशन, प्लांट सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन की उसको अफेक्ट करते हैं. द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दे वर्क एज फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर्स फॉर इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन टू. दे वर्क टुगेदर कोऑर्डिनेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स. Or what are these compounds? They could be indole compounds, indole 3-acetic acid, IAA, adenine derivatives like N6, furfuryl, aminopurine, kinetin, derivatives of carotenoids like abscisic acid, ABA, terpenes, gibberellic acid, GA3, or gases ethylene, C2H4. So we will discuss about their that functions, their meaning, discovery, और mainly इनका functions जो है वो आपको study करना है. इन हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या है. सो फ्यू हॉर्मोन्स टुडे वी विल डिस्कस एंड रिमेनिंग इन द कमिंग क्लासेस. सो we will discuss here what are the phytohormones: auxins, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, ABA, and ethylene. So these hormones, their functions we will discuss. Now classification of these plant growth regulators. PGRs means plant growth regulators. These are simple organic substances of diverse or different chemical composition required in low concentrations, and they influence the physiological activities of plants, leading to the promotion, inhibition, and modification of growth. That is why they are known as the plant growth substances also, plant hormones also, or phytohormones also. क्लासिफिकेशन कैसे किया हमने? तो ये जो पीजीआरएस हैं या फाइटो हॉर्मोन्स हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स. दे आर ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स. अब ग्रोथ प्रमोटर्स क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर्स, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज. प्रमोट करते हैं ग्रोथ को. So, growth promoting activity, it means like cell division, cell enlargement, tropic growth, flowering, fruiting, and seed formation. So, इसलिए इनको कहते हैं हम growth promoters, and these are auxins, gibberellins, and cytokinins. Another category is the growth inhibitors. Growth inhibitors क्या होते हैं? They are chemical substances like ABA, abscisic acid, involved in growth inhibiting activities like dormancy and abscission. तो ये growth को स्टॉप करते हैं. डोरमेंसी और एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. डोरमेंसी क्या होती है? द टाइम पीरियड व्हेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टेम्पररीली स्टॉप्ड. तो टेम्पररीली स्टॉप हो जाती है ग्रोथ, और इसके लिए होता है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल, एब्सिसिक एसिड, वेयर द फेलियर ऑफ द सीड टू जर्मिनेट ड्यू टू लैक ऑफ फेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरमेंट. एंड एब्सिशन का मतलब क्या होता है? एब्सिशन होता है falling or shading of leaves, fruits, and flowers. So this is done due to the that presence of these enzymes. This is abscission. So इस तरीके से ये categories है, classification है plant growth regulators और phytohormones का. So in the coming class we will study these hormones and their discovery, their isolations, and their functions.